Bismillahirrahmanirrahim. So we are studying Modern Tragedy by Raymond Williams. So this is about the concept and the tradition of tragedy, which keeps changing with the passage of time from Greek to the contemporary times. Williams, known as Raymond Henry Williams, was born in 1921 and died in 1988. He was Welsh Marxist theorist, academic, novelist, and critic influence within the new left and in the wider culture. So he was a leftist. His writings on politics, culture, and media literature made a marked contribution to the Marxist critique of the culture and arts. Some 750,000 copies of this book were sold in UK editions alone, and there are many translations available. So he talked about the tragedy and its tradition. So he begins saying that both tragedy and tradition are interconnected. He does not want to reject the present by the past or vice versa. So he's not going against anything. He's not going against any particular kind of tragedy, or he's not favoring anyone, but he's making a comparison of all the tragedies from past to present. And he thinks that the concept of tradition is important to understand the modern tragedy. कि modern tragedy को understand करने के लिए tradition का concept हमें पहले understand करना पड़ेगा, तब हम modern tragedy को understand कर सकते हैं. He feels that tragedy is not simply about deaths and suffering, or not even the response to it. देखिए basically ये it is a particular kind of event and a kind of response to the event that is purely tragic. Basically, he's talking about the response that we give to it. And there's certain events and responses in life that seem tragic while some are not. कि कुछ events हम life में देखते हैं जो कि tragic हैं और हमें लगते हैं, और हमें कई events tragic लगते भी नहीं हैं, so our response matters the most. For example, there were certain cases with women in the near past, जो कि हमारे सामने आए, public हुए, and they were tragic, and we had a response to it, क्योंकि we knew it. ऐसे कई cases हो रहे हैं जिनको हम सिर्फ अखबार में पढ़ लेते हैं, but वो हमें tragic नहीं लगते, क्योंकि हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं. So in a way, he means that tragedy की tradition को understand करना ज़रूरी है, और इसके changes को understand करना जरूरी है. He implies that tradition of tragedy has been different in every age. हर time में tragedy के अंदर change आया. Tragedy comes to us a word from the long tradition of European tradition, and it is easy to see this tradition as a continuity in one important way. कि basically tragedy जो है ये हमारे पास एक लॉन्ग ट्रेडिशन रखती है, उसके अंदर यूरोपियन ट्रेडिशंस भी इन्वॉल्व हैं, और ये जो ट्रेजेडी की ट्रेडिशन है दैट कंटिन्यूस, ये चलती आ रही है. सोशियो कल्चरल कॉन्शियसनेस इसमें शामिल है, एंड दिस कीप्स गोइंग ऑनवर्ड्स. Then he begins talking about the classical and medieval era. फिर he begins talking about the Greek culture, कि जो Greek culture था उसमें ट्रेजेडीज बड़ी यूनिक थी, जेन्युइन थी, और वो किसी स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन पे नहीं चलते थे. उनके एक नेटवर्क था बिलीफ्स का, जो कि उनके कल्चरल कम्युनिकेशन में बड़ा कॉमन था. लाइक मिथ्स थी जो कि बड़ी कॉमन थी, लोग सारी मिथ्स समझते थे, जानते थे. देन ऑल्सो द फोर्सेस जो थी नेचर की प्लस सुपरनैचुरल फोर्सेस, वो वीव कर रही थी फैब्रिक उस ट्रेजेडी का. गॉड्स इन्वॉल्व थे. So Greeks जो थे वो फेट को बड़ा नेसेसरी समझते थे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेट जो कि बड़ा रोल प्ले करती थी इस ट्रेजेडी में, और इसीलिए हमें लगता था कि वो जो सफरिंग है वो सफरिंग हर एक बंदे की सफरिंग है, क्योंकि वो सफरिंग इंसान की वजह से नहीं आ रही, प्रीडोमिनेंटली वो उस फेट की वजह से भी आ रही है. सो विलियम के नजदीक ट्रेजेडी इज नीदर सिंपली डेथ एंड सफरिंग, ना एक इसका रिस्पॉन्स. He believes that it is a particular kind of event and response as well. Which are purely tragic and embodied by long tradition.
कि सिर्फ डेथ और उसका रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जिनका एक्शन और रिस्पॉन्स इसमें मैटर करता है. Deliberating the historical development of tragedy, Williams says that when unique Greek culture changed, अब जो कोरस उसका बेसिक एलिमेंट था वो उसमें से निकाल दिया गया और द यूनिक मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी वाज लॉस्ट. तो अगर ग्रीक आज की ट्रेजेडी को देखें तो मे बी वो आज की ट्रेजेडी को पसंद ना करें, क्योंकि इसमें उन्हें कोरस नजर नहीं आएगा जो तब एक बड़ा इंडिस्पेंसिबल फिगर था उस किसी भी ट्रेजेडी का. मेडिवल एरा में क्या हुआ कि गवर्निंग फोर्सेस इन मेडिवल ट्रेजेडी उसमें ज्यादातर सुपरनैचुरल फोर्सेस नहीं थी लेकिन बहुत कम थी. They're replaced by circumstantial forces. अब जो काम सुपरनैचुरल फोर्सेस कर रही थी वो टाइटल एट्रीब्यूट कर दिया गया सर्कमस्टेंशियल, यानी जो कि हालात पैदा कर रहे हैं. अब प्रोटैगनिस्ट जो था मिडिवल एरा में, ही वाज नॉट इन द हैंड्स ऑफ सुपरनैचुरल फोर्सेस. वो सोशल अपहीवल्स में गुर्बत की जंग लड़ रहा है, वो अपनी एक मुआशरती जंग लड़ रहा है. लाइक फ्यूडलिज्म हो गया, चर्च हो गया, जो हम देखते आ रहे हैं चौसर के अंदर कि चर्च का रोल था, फ्यूडलिज्म का रोल था, अमीर गरीब को खा रहा था, तो ये भी उसने इंक्लूड किया उसमें. सो इन ग्रीक्स द ट्रेजेडी क्या थी बेसिकली, ट्रेजिक चेंज जो थी वो हैप्पीनेस से मिजरी की तरफ. एक बंदा बड़ी हैप्पीनेस की पोस्ट पे है, वो फिर मिजरेबल कंडीशन में आ जाता है. मेडिवल ट्रेजेडी में ये हुआ कि प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ, यानी इसमें फाइनेंशियल चीज भी शामिल होगी, मटेरियल चेंज आ गई कि लोग पहले बड़े प्रॉस्परस थे, गरीब हो गए. सो दिस वाज आल्सो ट्रेजिक. व्हाट हैपेंड इन रेनेसांस एरा? सो जो फ्यूडल वर्ल्ड, ये जो मेडिवल चीज थी उसे चेंज कर दिया गया साइंस से, लर्निंग से, मटेरियलिज्म से, इंडिविजुअलिज्म से. और Renaissance period was also dominated by the idea of rank. जिसे हम देखते हैं ओथेलो के अंदर, rank plays a vital role. ये learning और science plays a vital role in Faustus. Materialism plays a vital role in Jew of Malta. तो ये क्या बेसिकली जो Renaissance tragedies थी इसके अंदर मजीद चेंज देखा हमने ट्रेजेडी की ट्रेडिशन के अंदर. The tragic hero eminent in Renaissance tragedy is fallen to supernatural riddles and subject to his own faults and desires as well, as we find in Shakespearean plays. कि supernatural riddles भी हैं जो कि ghost की सूरत में, उन hallucinations की सूरत में, बैंकों के ghost की सूरत में, उन daggers की सूरत में, blood की सूरत में, और प्लस उन जो witches prophecies दे रही हैं उसकी सूरत में. और दूसरी तरफ देखें तो इन लोगों की अपनी डिजायर भी थी, इनकी अपनी फॉल्ट्स भी थी. मैकबेथ की अपनी फॉल्ट थी, हैमलेट की अपनी फॉल्ट थी, फॉस्टस की अपनी फॉल्ट थी. The character of Elizabethan tragedy is determined by a very complicated relationship between element of an inherited order and elements of a new humanism. So they seem somewhat confused in what they have acquired and what is the need of the time. So Raymond holds the view that Shakespeare was not the real inheritor of Greeks. Rather, he was a major instance of a new kind of tragedy. Shakespeare जो था ये to some extent he believes कि वो उनको इस लिहाज से represent नहीं करता कि ये एक नए किस्म की tragedy लेके आया. Like it was kind of a secular drama. In one sense, he says that all drama after Renaissance is secular. और Renaissance के बाद आने वाला तो हर ड्रामा secular है. Now, what is meant by secular here? पुराने dramas में you don't see anyone going atheist or talking bad about gods and goddesses. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जिस तरह जो openly Faustus is abjuring Trinity और God के against जा रहा है, मैजिक सीख रहा है और जो एक unwanted जो नॉलेज है या जो एक forbidden नॉलेज है उसकी तालीम ले रहा है. So this is all about the secular place. So Renaissance में क्या था, एक emphasis था fall of famous men, rank की जिस हमने बात की कि like a fate of ruling class was a fate of city. But the dissolution of feudal world, the practice of tragedy assumed new direction and modification. अब नई directions मिल गई society को.
Neoclassical period में क्या हुआ? Emphasis on dignity and nobility of the hero continued. कि डिग्निटी जो थी हीरो की बरकरार रही, उसकी नोबिलिटी बरकरार रही, लेकिन मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी वाज नाउ अ मैटर ऑफ बिहेवियर देन अ मेटाफिजिकल कंडीशन. अब जो डिग्निटी की टर्म है, it was very important. A dignified man was considered to be a man of style, hence language used was also beautiful with different features of embellishments. तो बड़ा डिग्निफाइड करके दिखाया गया ट्रेजेडी को कि जो बंदा है उसकी लैंग्वेज बड़ी पावरफुल है, उसके वर्ड्स बड़े एम्बेलिश्ड हैं, जो डिक्शन है बड़ी स्ट्रॉन्ग यूज की जा रही है. Behavior became more important, that it was thought that an ordinary man could also behave in a dignified manner. जरूरी नहीं कि सिर्फ किंग डिग्निफाइड हो सकता है. नियोक्लासिकल पीरियड में यह हुआ कि इवन अ सिंपल मैन कैन बी डिग्निफाइड थ्रू हिज वर्ड्स, अपने वर्ड्स के जरिए. सो राइटर्स ऐसी लैंग्वेज लिखते थे जो बड़ी पावरफुल होती थी, क्योंकि अब वो उस शान शौकत से लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे बल्कि उस लैंग्वेज से अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो द रियल स्पिरिट वाज मोरल देन मेटाफिजिकल. द ट्रैजिक एरर वाज moral weakness in an otherwise good man who could still be pitied. कि बंदा बजाय तौर पे अच्छा होगा लेकिन उसका एक आधा चीज ऐसी होगी, एक हमार्शिया होगा जो कि उसको ले डूबता है इन नियोक्लासिकल पीरियड. रेमंड विलियम कहते हैं कि लेसिंग्स जो कि जर्मन क्रिटिक था, उसने अपने लाइक थ्योरेटिकल रिजेक्शन नियोक्लासिसिज्म में और अ डिफेंस ऑफ शेक्सपियर में उसने एक और जो बुर्जुआ ट्रेजेडी जो कि लेटर ऑन आई उनके बारे में उसने बात की, उसका डिफेंस किया. To him, he was of the view that Shakespeare was the only real inheritor of the Greek tragedy. This is not by Raymond Williams, but by Lessing, who was a German critic. लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या थी कि जो शेक्सपियरियन प्लेस थे उसके अंदर कई ऐसी चीजें थी जो कि ग्रीक ट्रेजेडी को वायलेट भी करती थी, जिस वजह से रेमंड कहता है कि he was not true inheritor, क्योंकि यूनिटीज जो ड्रामेटिक यूनिटीज थी, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, इनको शेक्सपियर ने काफी वायलेट किया. सो दिस डजंट मेक हिम अ ट्रू डिसेंडेंट ऑफ द ग्रीक प्लेराइट्स. सेक्युलर ट्रेजेडी में क्या था जो कि आफ्टरवर्ड्स रिनेसेंस की तरफ आया. ग्रीक ड्रामा टिल रिनेसेंस वाज रिलीजियस वन, लेकिन जो ग्रेजुअल सेक्युलराइजेशन है ट्रेजेडी की, मोरालिटी बड़ा एक लीस्ट इंपॉर्टेंट इशू बन गया ट्रेजेडीज के अंदर, और उसको रिप्लेस कर दिया गया मटेरियल सेंस में और बहुत सारे दीगर इश्यूज में. हेगल, द फेमस फिलोसोफर, he feels that Greek tragedy has been seen as embellishment of the conflict between primitive social forms and new social order. और with Karl Marx क्या है? Renaissance tragedy has been seen as a result of the conflict between dying feudalism and the new individualism. Individuals suffer not because he is in conflict with gods of fate, but with the process of the social transformation. कि अब बंदा गॉड्स की वजह से, फेट की वजह से ट्रेजेडी का शिकार नहीं हो रहा, बल्कि वो जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसकी वजह से शिकार हो रहा है. And Schopenhauer and Nietzsche, they were German philosophers. इन्होंने बड़ा काम किया डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजेडी में. Schopenhauer से पहले ट्रेजेडी जो थी वो एथिकल क्राइसिस, ह्यूमन ग्रोथ और हिस्ट्री से रिलेटेड थी. उसने होल आइडिया को सेक्युलाइज किया और वो कहते हैं कि ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी इज द डीपर इनसाइट इनटू मैन्स ओरिजिनल सिन, द क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इन इटसेल्फ. कि ओरिजिनल सिन यानी वो जो फ्रूट खाया इंसान ने, वो तो उसके अंदर पहले से ही था और ट्रेजेडी इंसान के अंदर ही मौजूद है. नीचे कहता है कि ट्रेजेडी ड्रामेटाइजेस अ टेंशन which it resolves in a higher unity than the hero, who is the highest manifestation of will, is destroyed, but the eternal life of the hero will remain unaffected. So according to him, the action of tragedy is not moral, not purgative, but aesthetic. So whatsoever happens, hero को फर्क पड़ता है पड़े, उसकी फैमिली को फर्क पड़ता है पड़े, ट्रेजेडी का काम सिर्फ एस्थेटिक प्लेयर का देना है, एस्थेटिक प्लेयर कन्वे करना. Now in the contemporary area, जो era है, इसमें Raymond William discusses that he has discussed the four things: order and accident, the destruction of hero, the irreparable action, and its connection with death and emphasis of evil,
the tragic experience which is always unique, जिसको उसमें discuss कर रहा है. So order and accident क्या है basically? He does not agree with the view that there is no significant meaning in everyday tragedies. Because the event itself is not tragic, only becomes so through a shaped response. He cannot see how it is possible to distinguish between an event and response to an event in an absolute way. In the case of ordinary death and suffering, when we see mourning and lament, when we see people breaking under the actual loss, we have entered tragedy. In simple words, there are so many things happening in the world. So many tragic incidents are there. लेकिन हम उसको फील नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डेथ के बारे में सुना, अल्लाह सबको सेहत भरी जिंदगी दे, बट इफ वी कम टू नो अबाउट अ डेथ only if we are listening to a death of some person we don't know, तो शायद वो ट्रैजिक एलिमेंट नहीं आएगा, वो ट्रैजिक इफेक्ट फील नहीं करेंगे. लेकिन जब हम देखते हैं एक बर्न्ड फैमिली, या वो फैमिली जो कि बड़ी रो रही है अपने किसी के लॉस पे, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, दैट क्रिएट्स अ ट्रैजिक इफेक्ट. Raymond कहते कि we can only distinguish between tragedy and accident when we have conception of law and order. According to that law and order, some events are tragic while others are mere accidents. कुछ events tragic होते हैं, कुछ simple accidents हैं. And कुछ deaths ऐसी हैं जो कि tragic effects create करती हैं और कुछ deaths नहीं create करती. मतलब for example, a death of slave may be considered an accident, लेकिन एक prince की death को may be tragic समझा जाए. तो ये like this may be a distinguishing fact. लेकिन जो इमर्जिंग बोर्जुआ क्लास थी उसने रैंक्स को ट्रेजेडी में खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल था वो उसकी बट द एंटिटी इन हिमसेल्फ के इंडिविजुअल वाज not a state but the entity in himself. Okay, that loss may not affect the state, but at least it is affecting some person's own self. Raymond इस argument को reject करता है that event itself is not tragic but comes through a shaped response. It is not possible to distinguish between an event and response to an event. We may not have response, but it does not mean that event is absent. Suffering is suffering, whether we may not be moved by it or not. So Raymond in the end says, by rejecting the previous sayings, कि जो suffering है वो तो suffering है ही, हम उससे affect हो रहे हैं या नहीं हो रहे. Tragedy is tragedy. If I'm not moved by a death, that may not be tragic for me, but that may be tragic for someone whose near or beloved one was dead. Now, destruction of hero is another thing. The most common conception of tragedy is that it ends with like death of the hero. तो कई tragedies बल्कि ज्यादातर ऐसी होती हैं जिसमें हीरो की डेथ होती है, लेकिन कुछ tragedies ऐसी भी होती हैं जिसमें हीरो की डिस्ट्रक्शन नहीं होती, रादर स्टोरी चलती रहती है. और उसमें फॉर एग्जांपल हीरो रिमेन्स अलाइव, लेकिन ट्रेजेडी का एलिमेंट वहीं पे है. फॉर एग्जांपल गोइंग थ्रू इडिपस रेक्स, वो अपनी आंखें फोड़ देता है पहले उस फर्स्ट पार्ट में, लेकिन ट्रेजेडी गोज ऑन, ट्रेजेडी चलती रहती है. मॉडर्न ट्रेजेडी इज नॉट व्हाट हैपेंस टू हीरो बट व्हाट हैपेंस थ्रू हिम. तो आजकल की ट्रेजेडी हीरो के हवाले से नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में कि उसके जरिए ऐसा क्या हुआ जिसने ट्रेजिक इफेक्ट को पैदा किया. अब जो हम डेथ ऑफ अ सेल्समैन हमने पढ़ा, सो डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इसमें हम देखते हैं कि उसके जरिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो एक ट्रेजेडी थी, उसमें इन द एंड ही डाइड. अगर वो ना भी मरता तो द प्ले वाज स्टिल ट्रेजिक इनफ कि उसके जरिए ऐसा बहुत कुछ हो चुका है जिसने उस प्ले को ट्रेजिक बना दिया था. The death of an individual brings along with the whole community in the form of rituals and condolences, as in Adam beat. So tragedy जो है is a social and collective and not individual or personal. Adam beat में हम देखते हैं जब deaths होती हैं तो वो सारे characters जो हैं they are together, they are like family, लोग इकट्ठे हो जाते हैं. So that loss is not individual loss, that is rather like a collective loss, a societal loss I would say. फिर irreparable action में क्या कहता है ये? He believes that tragedy, that death in tragedy enables the witness to see the real meaning of life. और death जो एक universal character है, जो कि हम जैसा Hamlet में देखते हैं,
और इसका परपेचुअल इफेक्ट है ह्यूमन बींग्स पे, उन पे जो फेथ रखते हैं, बिलीव करते हैं. So death is universal, so a dead man quickly claims universality. However, William Raymond thinks that it is not single death or individual loss, rather it brings a change in the lives of the people surrounding and relating to him. Like in Death of a Salesman, जब उसकी Willie Loman की डेथ होती है, so उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारी डेथ के बाद वो जो तुम्हें इंश्योरेंस मिली उससे हमने घर की सारी किस्तें दे दी, लेकिन अब इस घर में रहने का क्या फायदा जब तुम ही नहीं हो. तो home was a home with you. फिर ब्रेख्ट ने लिखा A Rejection of Tragedy. So Williams essays Rejection of Tragedy is a study of rejection of tragedy in modern age with special reference to Bertolt Brecht, who founded epic theater. So इसमें वो rejection of tragedy में बात करता है ब्रेख्ट के बारे में, उसके थिएटर के बारे में. And he rejected the conventional idea of tragedy and made tragedy more experiential and rational. ब्रेख्ट ने अपने थिएटर में ट्रेजेडी को कन्वेंशनल आइडिया से हटा के एक एक्सपीरियंशियल लेवल पे ले आया, रैशनल लेवल पे ले आया. He made people think about situation presented in the play and not within. वो यानी एक करेक्टर की विद इन थिंकिंग से हट के अपरेंटली क्या हो रहा था, सिचुएशन क्या डेवलप हो रही थी, उसके ऊपर उसने फोकस किया. Aristotelian drama enforced thinking from within and Brecht's theater from without. अरिस्टोटल की जो स्टेज था वो कैरेक्टर की इनर वर्किंग और उससे ज्यादा रिलेटेड था. ब्रेख्ट का जो थिएटर था वो आउटर वर्किंग से ज्यादा रिलेटेड था कि एक बंदे के साथ सोसाइटी का क्या बन रहा है. इडिपस की ट्रेजेडी में वी आर रिलेटेड टू द ट्रेजेडी ऑफ इडिपस ओनली, और डेथ of a salesman में we are also related to the tragedy of his wife, his sons. So most common thing is that an action in which hero is destroyed, ये एक सबसे common interpretation है tragedy की. The fact is seen as irreparable, कि ये तो सारी बात इस loss का कोई हल नहीं है. So it happens, for instance, that a man who sees another on a street corner will only stump for an arm, will be shocked at the first time, will give him 6 pence. For example, आपको बंदा नजर आता है, फर्स्ट टाइम उसे पैसे देते हैं, सेकंड टाइम पैसे देने में कमी कर देते हैं, थर्ड टाइम आप उसे मे बी पुलिस के वाले कर देंगे, क्योंकि ये अब आप स्पिरिचुअल वेपन्स का यूज कर रहे हैं. अब आप बड़े कोल्ड ब्लडेड हो गए. सो दैट इज अबाउट सोसाइटी. सो दिस होल एसे इज अबाउट दैट वी समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कंसिडर के एक बंदे की डेथ हो गई तो वही ट्रेजेडी है. उसकी डेथ से रिलेटेड वो कोई बड़ा एक अजीम इंसान था तो उसकी ट्रेजेडी है. दैट मे बी अ किंग, दैट मे बी अ प्रिंस, दैट मे बी अ जनरल, तो उसकी ट्रेजेडी है. सो द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज के जो ट्रेडिशन है ट्रेजेडी का, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता गया, और उस चेंज में हम देखते हैं कि अब एक सिंपल बंदे की ट्रेजेडी भी उतनी ही ट्रेजिक है. बेशक उसमें उसकी डेथ नहीं भी हो रही तो स्टिल ट्रेजिक इफेक्ट क्रिएट हो सकता है. उसमें उसकी डेथ हो रही है या जो भी उसका रिजल्ट है, उसमें सिर्फ पहले प्लेस की तरफ सिर्फ वो एक बंदा मुतासिर नहीं हो रहा, बल्कि कम्युनिटी मुतासिर हो रही है, जो कि किसी भी मौत पे कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं उसको मौन करने के लिए. सो दिस वाज द मॉडर्न ट्रेजेडी.